Hello students, today is lecture 2 of vector algebra class 12 chapter 10 exercise 10.2 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज द वेक्टर एंड हाउ इट वर्क्स, इसकी टर्म्स, इसमें यूज होने वाले जो फैक्टर्स हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। उसके बेसिस के ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 5 क्वेश्चंस परफॉर्म किए। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स। Like the vector number 1 is 1, 2 and 1. The vector A is I minus 2 and vector B is minus 2, 4, 5. और according to the problem हमें इन्हें सम करना है, ऐड करना है। All the three vectors, like this is 1 and 1, 1 minus 2 plus 1 I cap, minus 2 plus 4 minus 6 j cap, 1 plus 5 minus 7 k cap. So it's a 0i plus minus minus plus 8 and plus 4 is minus 4 j cap. This is 5 plus 1 6 minus 7 is minus 1 k cap. Then the answer after adding these three, this is 0i, इसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, otherwise just leave it, and so the final answer कैन बी, आप इन दोनों में से किसी एक को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 7 एंड द स्टेटमेंट फॉर इट, द वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इज गिवन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसका अगर यूनिट वेक्टर हमें लिखना होगा देन इट विल बी ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। सो हियर इज वेक्टर इज, इसे इसी तरह से लिख देंगे, and the modulus or the magnitude of this vector is equals to 1 square plus 2 square, and it is I j plus 2k cap upon 2 to the 4, 5 and 6. It will be 1 by square root 6i, 1 by square root 6 j, 2 upon square root 6 k. Question number 8, find the unit vector in the direction of PQ where the point PQ are given. तो वेरी फर्स्ट हमें PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर इसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ फाइंड आउट करेंगे। तो PQ विल बी लाइक जैसे हमने कल लास्ट क्वेश्चंस में दिखाया था, PQ के लिए हमें Q माइनस P, इट मीन्स 4 द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, 4 minus 1 I cap, 5 the y coordinate of Q minus y coordinate of P is 2, this is j, and 6 minus 3 k. So it will be 3i, 3j and 3k. Now the unit vector in the direction of PQ for the PQ vector is vector PQ upon the magnitude of PQ vector. So this is 3i, 3j, 3k, 3 square, 3 square, 3 square, and this is 3 I, j, k, and it is 3 square root 3. So the final answer, the unit vector of PQ vector is 1 by square root 3 I cap plus j cap plus k cap.
Number 9, in which vector a and b are given, again need to find the unit vector for the a plus b. So first a vector plus b vector देखते हैं क्या बनता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 minus 1 is 1 of I, this is minus 1 plus 1, it is 0, and 2 minus 1 is 1. तो इसका हमें से दिस इज द यूनिट वेक्टर, यहाँ पे से यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस तरह से लिखिएगा, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन like this. This is 1i, 0j and 1k, modulus of 1 square, 0 square, 1 square, and finally it will be I plus j is 0, इसको रहने दें, plus k upon the square root 2, which is in the direction of the given vector which has magnitude 8 units. So यहाँ हमारे पास वेक्टर ए हमने ए कंसीडर कर लिया 5i minus 1j plus 2k, एंड हमें जो वेक्टर फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड वैल्यू 8 बननी चाहिए. तो हम ये काम करते हैं, जो हमें ढूंढना है वो इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये काम करते हैं, इसी का ही यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं गिवन वेक्टर का. It is 5 of I, j 2 of k, this is 25 plus 4 plus 1, it is square root 30, 5i j 2 cap 2k cap. Now हमें बताना है एक ऐसा वेक्टर which is in the direction of this vector with magnitude a. तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 8 like this. 8 को इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा with magnitude this a. So this is 8 5 40. So this is the way to get such vector which is in the direction with question number magnitude. 11, and in this statement we are given two vectors 2i minus 3j plus 4k, vector b is equals to minus 4i plus 6j minus 8k. We need to prove that these two vectors are collinear. For that, let's see the unit vector of first vector a. Now the unit vector of the second, this is 4 square 16, 36, 64, 116, 29. By taking minus 2 common from above, like 2i minus 3j plus 4k cap, this 2 and 2 cancel, we'll left with look at the b vector b cap is equals to the value which is equals to the value of a cap with minus. तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि दोनों के यूनिट वेक्टर along its direction जो है सेम है, but this negative sign shows that the vectors are collinear but its directions
are opposite to each other. So that this is the number 12. Find the direction cosines of this given vector. Say the given vector is this, and find out the again the unit vector along this vector, which is like this. तो यहां से we write it as हमें फाइंड आउट करना था डायरेक्शन कोसाइंस. ये जो वैल्यूज रहती हैं आर द डायरेक्शन कोसाइंस of respective axis of like x axis, this is of y axis, this is of z axis. So these are the direction cosines for a given vector. 13, in which we are given with the 2 points a and b with their coordinates. The coordinate of a is 1 2 minus 3 and minus 1 2 1 are the coordinate of b. We need to find the direction cosines of AB vector, like vector in the AB direction. तो यहाँ पे पहले AB फाइंड आउट करते हैं. What vectors comes out like -1 -1 I, this y minus y, and 1 minus of minus 3, minus of 2 0j, this one. We need to find direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें क्या करना होगा, वही प्रोसेस होगा. यूनिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे. उसमें से ही हम जो कोफिशिएंट्स होंगे या कह लो कि जो हमारी एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे. तो अगर हम देखें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू that minus of 2 square root 2 to the 4 plus 0 square plus 4 square minus 2 square 0 square 4 square. For the next 0 upon again the same term, लाइक हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग भी हम ये कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट बनाए थे यूनिट वेक्टर बनाकर भी हम कर सकते हैं. ये भी दिस इज -2, दिस इज स्क्वायर रूट 4 4 द 16 16 plus 4 is 20, this is 0 by 20 and this is 4 by square root 20, and final it will be -2 2 square root 5, this is 0, this is 4 upon 2 square root 5, and the final answer direction cosine are equals to this is -1 by square root 5 0 and 2 by square root 5. Question number 13, and the statement we need to find the direction cosines of the vector which is in the direction of AB. like AB वेक्टर पहले फाइंड करेंगे फिर उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करके दिखाएंगे. पहले AB वेक्टर देखते हैं क्या होगा. द कोऑर्डिनेट A and B आर द गिवन. फ्रॉम हियर दिस इज -1 I cap plus this is -2
j, and this is 1 of minus 3 k cap, 3 plus 1 4 k cap. दिस इज द ए बी वैक्टर. हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए. डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमें दिस इज माइनस ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ ऑल. दिस इज माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. नेक्स्ट इज माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट minus 2 whole square minus 4 whole square and 4 square, again 4 upon square root जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था यूनिट वेक्टर फाइंड करके, उसको उस तरह भी हम हैंडल कर सकते हैं. लाइक दिस इज 2 to the 4 16 plus 16 minus 4 square root 4 16 plus 16 4. This is 36. So direction cosines of AB vector finally will be minus 2 by 6, 4 by 6 again, and the final answer is minus 1 by 3 minus 2 by 3 and 2 by 3. This vector is equally inclined with the OX, OY and OZ. Mean to say these are the axis, x axis, y axis and z axis. तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस ही निकाल देंगे. अगर तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस बराबर होंगे तो हमारा पर्पस क्लियर हो जाएगा, दैट इक्वली इंक्लाइंड. तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस फॉर दिस ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर. नेक्स्ट 1 upon 1 square 1 square 1 square and 1 square 1 square 1 square. So this is your square root 3. So clearly, because all direction cosines L, M, N are equal, it means we can say this vector is equally inclined with OX, OY and OZ. In the question number 15, find the position vector of point R which divides the line segments P and Q in the 2:1 internally and externally. तो very first हम internally के लिए बात करेंगे. In the internally, the value of R will be according to the formula that we multiply this 1 with this vector and 2 with this vector. It will be 1 multiply this I 2j plus 3k and this 2 multiply with q vector, and the q vector is this upon this ratio. So this is your I 2j and 3k cap like this. R vector will be, vector is 2 minus 2 plus 2 4 and 3 plus 2 5 like this. So finally the R vector will be minus 1 by 3 J and 5 by 3 K cap. Now the second part,
यही हमें आंसर निकालना आर वेक्टर बट एक्सटर्नली। इन दोनों में फॉर्मूला का डिफरेंस रहता है। द रेस्ट थिंग्स आर वेरी सेम। लाइक आर वेक्टर विल बी लाइक 1 मल्टीप्लाई स्टॉप करिए। आर वेक्टर like 1 multiply this k minus and this is this is 2 plus 1 3i and this plus 2j minus 2 3i 0j and this is minus of 3k with minus 1 and it will be minus of 3i plus 0j and plus 3k is the answer. Question number 16 and the points are given 2 3 4 the q41 minus 2 is given. तो यहाँ पर भी हमें फाइंड आउट करना है एक पोजीशन वेक्टर, एक ऐसे पॉइंट का द पोजीशन वेक्टर द पॉइंट ऑफ द पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पर प्रोसेस सेम ही रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो जैसे लास्ट 2:1 थी तो मिड पॉइंट के लिए रेशो 1:1 हो जाती है। लाइक तो यहाँ पर जब ना कहा जाए तो हम उसे इंटरनली ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ही हमें आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर क्लियरली हम दोनों को क्या करेंगे, दिस इज 2i पहले लिखना जरूरी है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो इसको 2i 3j प्लस 4k प्लस क्योंकि 1:1 ही है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ डिफरेंसेस तो क्रिएट होंगे नहीं, upon 1:1 like this. R vector will be, this is 2 plus 4 6i 4j plus 2k upon 2. Finally this R vector will be 3 2 1. Next so this is the last 17th question of this exercise 10.2 in which show that the points A, B, C with the position vectors like A, B, C are some any points with the position vectors like A vector, B vector and C vectors. These are the coordinates यहाँ पे given है। हमें प्रूव करके दिखाना कि with these coordinates this ABC make a right angle triangle. तो ये कुछ that right angle triangle, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेंगे हम, बट उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोइंग टू फाइंड द लेंथ AB। पहले AB वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। व्हाट विल बी द AB वेक्टर, दिस इज 2 minus 3 minus 1 minus minus plus 4j and 1 minus minus plus 4k. So this is minus of I 3j 5k. For the next is your BC. BC will be that 1 minus of 2 plus minus 3 minus minus plus j and minus 5 minus 1 k. This one. The last one is your like AC. It is 1 minus 3 I minus 3 minus minus plus 4 j minus 5 minus minus plus 4 k.
minus of 2i plus 1j minus 1k. These are the AB, BC and AC. Now the modulus of AB is 1 9 25, which is equals to 25 plus 5 30 plus 1 34 and 35. AB, the modulus of BC is 1 plus 4 plus 36, which is 36 plus 4 40 41, and AC it is 4 plus 1 plus 1, which is 6. Now these are the three lengths. तो अगर तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम कह देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है जो बना ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसके लिए लुक एट द longest length is highest length, longest length ये square root 41. So this is square root 41 square is equals to 35 square plus square root 6 का square. तो ये बन जाएगा हमारे पास 41 is equals to 35 plus 6, which is 41. So यहाँ से that Pythagoras theorem के according that hypotenuse square is equals to, it means it works a hypotenuse. The rest two are the one of them is a perpendicular, कोई एक perpendicular है कोई दूसरा base का काम कर रहा है. So clearly these dimensions, or you can say these three vectors, are making a right angle triangle.